Bismillahirrahmanirrahim. Student, this is essay number 1, the internet for the student of English part 2. Now let's get started. The first one is introduction. The internet has globalized. Globalized मतलब इसने दुनिया को इकट्ठा कर दिया है, ठीक है. The world इंस्टेंट फौरी तौर पर कनेक्टिविटी हो जाती है, राब्ता हो जाता है. हैज़ ब्रिज्ड, ब्रिज मतलब इकट्ठा कर देना, मिला देना. जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस, जियोग्राफिकल होता है ज़मीनी, जो फासले हैं उनको आपस में मिला दिया है. ग्रेट एक्सेस टू अनलिमिटेड नॉलेज, और इस तरह हम बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. इट हैज़ क्रिएटेड मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और कारोबार के लिए भी बहुत सारे मौके पैदा कर दिए हैं. इट हैज़ आल्सो इंक्रीज साइबर क्राइम, जिसके ज़रिए साइबर क्राइम यानी जो हम इंटरनेट के ज़रिए फ्रॉड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. फिर आखिर में हम कंक्लूजन को लिखेंगे. जी, एक कोटेशन है, इसको आप मार्कर से लिखें, और जो बिल गेट का नाम है यानी उसका आप ब्लैक पॉइंटर से लिखें, इसको ब्लू से लिखें. द इंटरनेट इज़ बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो, बिल गेट. The internet has revolutionized the way we live. Revolutionize का मतलब होता है इनकलाब बर्पा कर देना. हमारी ज़िंदगियों में इंटरनेट ने इनकलाब बर्पा कर दिया है. We live, work and communicate, और बातचीत इसके ज़रिए करते हैं. In just a few decades, decades होता है 10 years के अंदर अंदर, it has transformed from a niche technology, ठीक है, एक जो हमारी इसमें niche technology है, एक ख़ास to an essential part of our daily life. The internet has connected people from all corners of the globe. पूरी दुनिया से एक दूसरे के साथ लोग जुड़ चुके हैं. Allowing for instant communication, फौरी तौर पर हमें ये राब्ता भी फराहम करता है. Access to vast amounts of information and new opportunities for collaboration, आपस में तावन करने के लिए, and innovation, और नई नई चीज़ों को इख्तरा करने के लिए. In this essay we will explore the impact of internet on society and its role as a कैटलिस्ट. कैटलिस्ट होता है किसी चीज़ को तेज़ करने के लिए, फॉर चेंज. द इंटरनेट हैज़ अनडाउटेडली हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन विद द एडवेंट ऑफ. द इंटरनेट हैज़ अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं, हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिकेशन. इम्पैक्ट होता है असर. इसने हमारी बातचीत पर, हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उस पर असर डाला है. विद द एडवेंट, एडवेंट होता है आमद ऑफ ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग हम कर सकते हैं, एंड सोशल मीडिया, इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप. कनेक्टिंग विद अदर्स हैज़ नेवर बीन ईजियर, इतना आसान पहले कभी ना था. लॉन्ग गॉन आर द डेज, पुराने वक्तों में, ऑफ वेटिंग वीक्स फॉर अ लेटर टू अराइव इन द मेल, खतों का कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था. आजकल क्या है, टुडे वी कैन एक्सचेंज मैसेजेस विद पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. व्हाट्सएप पर लिखें, ईमेल करें, और फौरी तौर पर उसको मैसेज मिल जाता है. दिस इंस्टेंट कनेक्टिविटी, फौरी तौर पर ये राब्ता जो है, हैज़ ब्रिज्ड, ब्रिज का मतलब आपस में मिला देना. जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर टुगेदर एंड फोस्टरिंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, और उसने पैदा किया, फोस्टरिंग मतलब इसने इनिशिएट किया है, जनरेट किया है. वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर डे बाय डे, और दिन ब दिन हम एक दूसरे के साथ मिलते जा रही हैं. I think there should be regulations on social media to the degree that it negatively affects the public good. Elon Musk. Okay. So here we have a quotation. I think there should be regulations on social media to the degree that it negatively affects the public good. Elon Musk. That is a quotation. Write with blue marker. Furthermore, the internet has democratized, एक दूसरे के साथ जमहूरियत को प्रमोट कर रहा है. Access to information. In the past, knowledge was limited to those with access to libraries and educational institutions. सिर्फ उनको बुक्स मिलती थी जिनको एक्सेस होती थी लाइब्रेरी तक. Now, a wealth of information is just a few keystrokes away. Search engines like Google have become our virtual librarians, providing answers to our questions in an instant, फौरी तौर पर. This accessibility to information has empowered
इंडिविजुअल्स इट हैज़ अनेबल्ड, इसने हमें काबिल बना दिया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ज़िंदगी भर के लिए हम चीज़ों को सीख सकते हैं, फैसिलिटेटेड इनोवेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ. The next you can write the quotation. The great thing about social media was how it gave a voice to voiceless people. Excellent, John Ranson. The internet has also transformed industries and created new opportunities. इससे हमें कारोबार नए के उसके मौके मिल रहे हैं. E-commerce has revolutionized the way we shop, allowing us to purchase goods and services from the comfort of our homes. Online platforms like Amazon and Alibaba and many others have become giants in the retail industry, reshaping traditional business models. Moreover, इसके अलावा the rise of the gig economy has been fueled, इसने भी तेज कर दिया इस काम को, by the internet with platforms like Uber, Airbnb connecting individuals with services and accommodations. Accommodation मतलब उसमें रिहाइश और उसमें सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है. The internet has opened up new avenues, avenues मतलब रास्ते, for entrepreneurship and employment, providing individuals with the means to generate income and pursue their passion. The internet is the most important single development in the history of human communication since the invention of call waiting. David Barry. It's a very beautiful quotation you can use after each paragraph. However, the internet is not without its challenges. इसमें भी बहुत सारे challenges हैं जिनको हमें देखना पड़ता है. Privacy and security concerns have emerged. Emerge का मतलब निकलना, appear होना, as significant issues in the digital age. इसमें जो है वो corruption है और malpractices बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. With vast amount of personal information जो है being shared, एक दूसरे के साथ share हो चुकी हैं. हमारा personal data जो है वो save नहीं रहा. There is an increased risk of identity theft, cyber crimes. Additionally, मज़ीद the spread of misinformation जो है वो भी लोगों तक पहुँचाई जाती हैं. And the rise of online echo chambers, यानी बैठकर लोग जो हैं बंद कमरों में जो फैसले करते हैं वो आवाज़ें बाहर आ जाती हैं. Have raised questions about the reliability of information on the internet. Reliability मतलब किस बात का एतबार करें और किस बात पर ना करें. Individuals, governments and organizations must work together to address these challenges. सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि लोगों का इत्मीनान बहाल हो. And ensure a safe and trustworthy online environment भी लोगों को मिले. Last paragraph है जी. The internet has transformed the world in ways we could not have imagined. यानी जिस हद तक हमें ये आगे ले आ चुका है ये हमारे तसव्वुर में भी ना था. Just a few decades ago, it was impossible to imagine what we have done so far. जितना हमने इसमें तरक्की की है ये हम सोच भी नहीं सकते थे पास्ट में. With the help of the internet, इंटरनेट ने हमें बहुत आगे ले गए हैं. इन स्टडीज़ में, रिसर्च में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में. It has connected people, democratized information and created new opportunities for communication and innovation. Okay, so इसको आप इस तरह रीड कर सकते हैं. democratized information and created new opportunities for communication and innovation. While it has its challenges, अभी हमें कुछ इसके challenges भी दरकार हैं. The benefits of the internet far outweigh, फ़ायदे ज़्यादा हैं, the drawbacks भी इसके साथ साथ हैं. As we move forward, it is essential to harness the power of internet respectively and ensure that it remains an inclusive and secure space for all. यानी ये अगर इंटरनेट यूज़ हो तो सबको सिक्योरिटी मिले, सेव हो. The internet has the potential to continue shaping our lives and society for the better, and it is up to us to make the most of this remarkable tool. We can also solve many challenges with the help of the internet in future. So this is your first essay and prepare it, and if you want to get the PDF file just see in the descriptions and you can
And if you want to learn more essays, follow my channel to see onward essays. Thank you.